Good afternoon, students. Welcome to the live virtual classes of Board of Studies ICAI. Today's session for the foundation course is Paper 3 Quantitative Aptitude, the chapter number 2 Equations. Today with my faculty, CA Gaurav Chopra, along with me. He is the mentor for this section also along with me. The equations is a very important chapter. It's a very scoring. Students can be able to attempt very quickly if they are good in the analytical calculations are also. And we have with in this chapter, they understand the concept of equations and what is the degree of the equations. Mathematical equation means it is in the word problems can be expressed there. Understand the concepts with the help of linear or simultaneous equations or quadratic equations or cubic equations. These are all the various types of expression forms actually. How these different methods can be solved with the help of the applications. One is the quadratic equations methods and one is the simultaneous equations method. And from that, we have the faculty with us, Sri Gaurav Chopra, and over to you for the Thank you so I much, had sir. just briefed about the subject also. Yes. So thank you so much, sir, for the introduction. So welcome everybody and very good afternoon. So today's our topic is equation. So basically, what is an equation? Equation means equality. When two things are equal, left hand side and right hand side, both are equal, then we put equal to sign in between, right? So this is the part of algebra which we are studying from class number 6, right? Now, here in our syllabus, it is completely multiple choice question. And the main thing which we have to focus on this chapter is to solve the question using options. So सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन इस चैप्टर को सॉल्व करने का वो है एमसीक्यू से वो है ऑप्शंस के साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे राइट सो लेट अस बिगिन विद अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर so first of all we are learning about the types of equation or the you can say degree of equation. Degree means when the maximum power of a variable in an equation is 1. जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. सो दिस इज द फर्स्ट केस. So this is the example of linear equation. You can see that x is having power only 1 in the whole equation. So it is linear. Whereas in the second equation, you can see that the maximum power of x is 2. Okay, only you have to see the maximum power. Don't see the lowest one, only the maximum one. So here x is having the power 2. So it is known as quadratic equation. Then the third case, when the maximum power of a variable is 3, then it is known as cubic equation. Cubic equation. And the fourth case, when there are different equations are available, that means one is x and one is y. Two variables are available. Then we have to simultaneously solve this equation to get the result. So again, there are different methods to get the result. So first, if you talk about the simple equation means equation with single variable. When there is only one variable in the whole equation, then it is known as simple equation. So in that, if you solve it completely, just keep the variable on one side and constant on other side. You will get the result. So let's take some example or some questions from here. So if you talk about, let's say question number 1. Minus of 7x plus 1 is equal to
is equal to 5 minus 3x. Now you have to simplify this for the value of x. Just bring x on one side. So minus 7x plus 3x will give you 5 minus 1. So minus 4 of x is equal to 4. Therefore, value of x will be minus 1. Value of x will be minus 1. So whenever these are simple questions, we can solve using this method. Students, my side actually request Goroji. Yes, sir. This exercise can be done by using the options, trial and error method also can solve out whole exercise also. What do you say? Yes, sir. We can solve the questions using option method, and this is very convenient method. In the examination also, if they want to let's take, if we take about like some complex example. Sorry, sir. In the examination, if they want to get the answer quickly, what is the best way to get the solution? The best way is the option method, because option method is very quick. Just in few seconds, we can get the answer. Yes, thank you. So from exam point of view, that is the best method. Yes. Now come to any other example which you feel difficult in the examination point of view also. Can you please explain anything of this? Yes, we can. Any among them? Yes, we can describe one question with the help of option. Question number. Which one, sir? Question number 7. Is it possible? Yes, sir. 7 we can try using options. Yeah. So in this question, if we try to solve, it will become lengthy. So let's try the first option. And since the calculation are easy, some of the calculation can be done in mind also. So let's put the first option 6 in place of P. So 6 plus 2 gives 8. 6 minus 3 gives 3. Then plus 8 plus 3, sorry, 6 plus 3 gives 9. And 6 minus 4 gives 2 equal to P is 6. 2 into P 12. 12 minus 5 is 7. Now we have to check whether both the sides are equal or not. So 24 plus 18, we are getting 42 on left hand side, and 6 multiplied by 7, 42 on right hand side. So since both the sides are equal, therefore option number A is correct. Very good. This is the best way to get the solution. First option itself, we got the solution. Yes. And we tick on that also. We go ahead with that solution. Yes, sir. Next, coming to actually, I feel that rest of question number 9, explain, please. Okay. So question number 9, let's take again. So in this question, is some, yeah, you can explain it, please. So in this question, if we put the option, then both the sides must be equal again. So if you put option number A, that is 0. So the first part will become 0, because 0 upon anything is 0. Third part will also be 0. But 1 by 0.05 and 1 by 0.0005, something will be there on left hand side, whereas on right hand side we are getting 0. So therefore option A will not match. Option A से आपका answer match नहीं हो रहा है because values are different. Then let's try with option number B. You can easily quickly try and move forward. If you try with B option, 1 by 0.5, then 1 by 0.005, all these values are different. 2 are positive and 2 are negative. So we are unable to cancel them all. We are unable to cancel them. If they do not cancel, then answer will not be 0. Therefore, we can leave option number 2 also. Then the third option, 10. If you try with 10, I'll explain here. If it is 10, so 10 by 0.5 minus 1 by 0.05, then 10 by 0.005 and minus 1 upon this. So in this case, the two values are getting cancelled.
then next third and fourth values are also again getting cancelled. Therefore, the result is 0. So left hand side and right hand side both are equal with option number C. So we can be quick in putting the options. Yes. Thank you, Gaurav. Thank you, sir. Now coming to the eighth question number 8, somebody was asking about this. Yeah. Okay. So for I question don't know the member from our student CACS Admya Aravind has requested. Please explain on this. sorry, sir. Eighth question. Yeah, Mr. Admya Arvind has requested the Okay, question sir. number 8. Question number 8. Okay, sir. So for question number 8 again, we can use the option. So let's use it quickly to get the result. If we try option number 1, option number 8, that is 1. So 12 into 1 is 12 plus 1 is 13. 13 upon 4. This is left hand side. Whereas in right hand side, we are having 15 minus 1, 14 upon 5 plus 2 minus 5 is minus 3 divided by 3 minus 1 is 2. Now we have to quickly check whether both the sides are equal or not. So here you have to take the LCM and then simplify. And we can see that after taking LCM, the right hand side is becoming 10, then 28 minus 15. So we are getting how much? 13 upon 10. Whereas left hand side is showing 13 by 4. So option number A is wrong. Option number A is incorrect. So then we can try with the second option. If you go with second one, it is 2. So 12 into 2 is 24 plus 1, 25. So 25 by 4 is on left hand side. On right hand side, we are having 30 minus 1 is 29 upon 5 plus 4 minus 5 is negative 1 and 6 minus 1 is 5. Now, on simplifying this, how much we are getting? 28 upon 5. So again, it is not possible to match. Both are mismatch. Then again, let's try the third one. In this equal 12 into 5 is 60. So 61 by 4 is equal to 15 into 5, 75 minus 1, 74 upon 5 plus 10 minus 5 is 5 and 15 minus 1 is 14. Now again we have to check whether the result is same or not. So if we take the LCM, 70. So 14 into 74 you have to do plus 5 into 5. So again they are not same or same. Let's check. 14 into 74 plus 25 and then divided by 70. So after solving this, we are getting 15.15, and whereas on left hand side, we are getting 61 by 4, that is 15.25. Slight variation is there. And with option number D, if we try, 12 into 7 is how much? 84 plus 1 gives 85. On the right hand side, 15 into 7. 15 into 7 is how much? 90. 90 minus 1 is 89 upon 5 plus 14 minus 5
gives 9 and 21 minus 1 gives 20. Now again, let's simplify this and get the result. So LCM will be 20. 89 multiplied by 4 plus 9, 365 divided by 20. We are getting 18.25. So this is not matched. So the closest option is C. So we can select that 5. So now we can proceed towards the word problem. Now in word problem also, there are two ways of solving the question. One way is to form the equation and then simplify. Second way is to check the condition and get the answer directly. Okay. So using these two ways, we can always select the best method and the shortest method in the examination. Because in exam, you will always be short of time. So if I move with exercise B and question number 1, just we are solving using option, the best way. The sum of two numbers is 52. Now check this first condition. कौन से ऑप्शन का टोटल 52 आ रहा है? If you check option 1, total is not 52, just cancel it. 12, 10, 52. C option, 27 plus 25. First condition is satisfied. Now check the second condition also. What is the second condition? Difference must be 2. So yes, 27 and 25 का difference 2 है. Therefore, option number C will be correct. Option number C will be correct. Now there is a doubt from Hema, and Hema is asking question number 2. Okay. Question number 2 is again a good question. The diagonal of a rectangle is 5 centimeter and one of its sides is 4 centimeter. Find the area. Now, since we are talking about a rectangle, so we have formed this rectangle here. You can see clearly. This is the rectangle whose diagonal is 5. And then one of the side is 4. One of the side is 4. Then we have to find out the other side. So whenever you are talking about a right angled triangle, we can apply the Pythagoras theorem to find out one side. So what is that? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now what is hypotenuse? It is 5. So 5 square is equal to base is 4 square and perpendicular we have to find it out. So on solving, we are getting the perpendicular as 3. So therefore, the two dimensions of rectangle are 3 and 4. So therefore, the required area of rectangle will be 3 multiplied by 4, that is 12 square units or 12 square centimeter. This will be your result. Okay. So in this way, you can simplify and get the result. So using option, most of the questions can be solved within 30 seconds. Most of the questions. Okay. Few might take some time, but yes, 99% cases in less than 1 minute, you will be able to solve. All right. So in this exact exercise number 1B, B, is there any further doubts which you want to ask so that I can pick that question accordingly? B exercise में अगर आपका कोई particular doubt है, कोई specific doubt है, तो मैं उसको select कर लेता हूँ.
So any particular choice, let's select. Okay. Mehak is asking for question number 5. Okay. And one more person. Mr. Arvind is asking about question number 6. Okay. Reshma, question number 11. All right. So let me take question number 5 first. Question number 5. The fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. Then find out the number. Okay. Now, what you have to do, जैसा question ने बोला है, बस वैसा आपको करना है. Fourth part of a question of the number. So first option is 84. I am talking about question number 5. First option is 84. तो 84 का आपको क्या लेना है? 1/4. कितना होता है? 21. And sixth part of the same number. तो 84 का 1/6. 84 का 1/6. It is how much? 14. Now, what is the difference? Difference is 7. But according to question, we require difference of 4. So option number A is wrong. Now try with option number B. You can see 44 is not divisible by 6. So we can leave this option first. Try with option number C. So 48 का 1/4 आपने try किया, it is 12. And 48 का 1/6 we have tried. So 1/6 is how much? 8. Now check the difference. Now the difference is 4. Therefore option number C is correct. So question number 5 में clearly option number C is correct. Now the next question which Mr. Arvind has asked is about question number 6, and Joy is also asking the same question, 6, and it is again a very good question. 10 years ago, the age of father was 4 times of the son. तो 10 साल पहले फादर एंड सन का रेशियो कितना हुआ एज का? 4:1. 10 year hence, 10 साल के बाद एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ द सन. दैट मींस 10 साल के बाद रेशियो कितना होगा? 2:1. फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. नाउ ऑप्शन में जो भी आपको एज गिवन है दैट इज द प्रेजेंट एज. वी विल चेक द ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चेक करेंगे पहले. So let's make some space. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 50 and 10. Question number 6. First option 50 and 20. Now 10 years ago, 10 साल पहले की बात करते हैं. 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी? 40 and सन की एज कितनी होगी? 10. Now क्या रेशियो मैच हो रहा है? 4:1. Yes, the ratio is correct. So first condition is satisfied. Now check the second condition. Second condition में क्या check करना है? After 10 years. So after 10 years, age of father will be 60. Age of son will be 30. Now what is the ratio? The ratio is 2:1. Age of father is twice. So this condition is also satisfied. Therefore option number A is correct. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकेंड्स आपको लगेंगे and you can get the answer. All right, this was question number 6. Question number 8 is also important, such kind of questions, sir. Students can also quickly do this. तो वॉइस थोड़ा सा लो होगा. Gaurav sir, question Yes, number sir. 8. Question number 8. 8. Yeah, please. Okay, sir. Okay, sir. So now question number 8. The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2. See, this is the first condition. Denominator क्या होना चाहिए? Denominator बड़ा होना चाहिए. किससे? न्यूमरेटर से. कितना बड़ा होना चाहिए? by 2. तो check this first condition. Now जैसे आपने first condition को check किया, this is satisfied by all the option. In all the option, denominator is greater by 2. Okay. All options are satisfying condition 1. Now check about the condition number 2. If 5 is added to numerator,
द फ्रैक्शन मस्ट इंक्रीज बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1। अगर आप न्यूमरेटर में 5 प्लस करते हो तो आपका पूरा की पूरा नंबर 1 से इंक्रीज होगा। यहां पे एक छोटा सा लॉजिक लगाना, बस एक छोटा सा लॉजिक। क्या? अगर मैंने न्यूमरेटर में 5 ऐड किया है और मुझे ओवरऑल नंबर 1 से इंक्रीज करना है, तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी तो आपका नंबर 1 से इंक्रीज होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर में 5 से कम है तो इट विल एक्सीड 1। लेट्स से डिनोमिनेटर इज 3, तो इट विल बी इंक्रीज बाय 1.66। इफ डिनोमिनेटर इज 7, इट विल इंक्रीज बाय लेस देन 1। 5/7 का मतलब हो गया 0.71, बट हमें तो 1 से इंक्रीज करना है। तो जस्ट एक लॉजिकल के लिए मैं बता रहा हूं, ऊपर 5 है तो अपॉन में भी 5 होना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज हैविंग दैट। सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर ऐसा है। तो ऑप्शन डी में आप रख के चेक करना चाहे कर सकते हैं। पहले आपका वैल्यू था 3/5, दैट मीन्स 0.6। अभी आपने 5 प्लस किया, now the number is becoming 1.6, so the overall number is increased by 1, therefore option number D is correct. So this is question number 8. Then Preeti is asking about question number 9. Mehak Preet is also saying question number 9. Okay, now again check the condition, you will get the result. Okay, we are reading the question, just find the condition one by one. 9 says 3 persons, one is Mr. Roy, second is Mr. Paul, third is Mr. Singh. Together have rupees 51 in total. ये क्या होना चाहिए? टोटल। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है कि सारे ऑप्शंस का टोटल 51 होना चाहिए, या जो हमारा आंसर होगा उसका टोटल 51 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? मिस्टर पॉल हैज रुपीज 4 लेस देन मिस्टर रॉय। तो रॉय का है फर्स्ट पोजीशन पे है, रॉय इज ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड रॉय से 4 रुपए कम होने चाहिए किसके पास? पॉल के पास। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 यू कैन चेक, 20 एंड 16, 4 रुपीज का डिफरेंस है। And if you check the next condition, Mr. Singh has got 5 less than Mr. Roy. So third wala Mr. Singh hai, 20 minus 5 is 15. So all the conditions are satisfied by option number A. Therefore, you can select this. So this is the easiest way. Now, somebody has asked question number 10, that is Mahi. Okay. Mahi ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। सी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको फिर से कंडीशन चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर है। द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। तो टेंस एंड यूनिट आपको पता है कौन सा होता है? दिस इज द प्लेस वैल्यू, फर्स्ट वन इज यूनिट्स प्लेस, देन टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिट एंड टेंस प्लेस। ओके, तो the digit in tens place is 3 times the digit in unit place. अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, अगर 2 है तो यहाँ 6 होगा, 3 है तो यहाँ पे 9 होगा। तो इनमें से चेक करो कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 93, तो क्लियरली 93 इज योर आंसर। दिस इज द वन वे टू सॉल्व। ओके, एक तरीका तो क्या हो गया आपका? हिट एंड ट्रायल मेथड, आपने ट्राई किया एंड सीधा आंसर आ गया। दूसरा वे एक और है, वो है यूजिंग ऑप्शन। तो आपने ऑप्शन में चेक किया और सेकंड कंडीशन को भी देखा। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो 39 में से 54 लेस नहीं कर सकते, इट विल बिकम नेगेटिव। 92 में से आपने 54 लेस किया, इट इज नॉट 29। ओके, मैच नहीं हो रहा है। 93 में से आपने 54 लेस किया, यू आर गेटिंग 39। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मल्टीपल वेज आर देयर टू सॉल्व।
Great. So Arvind is saying, thank you so much. I'm able to solve within seconds. That's great. That's good going, Arvind. Rohit, you have raised the hand. At present, you can post your query, Rohit. And in the last half an hour, we will ask you to speak up, right? But at present, you can post your query in the chat section. Reshma is asking about question number 11. Okay. See, again, the same thing, just follow the conditions. So, if you talk about question number 11, one student is asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4, and then to add the two quantities. और उन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था. Instead of doing so, the student divides the given number by 5. उसने क्या कर लिया, पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर लिया. If the answer is short by 4, तो जो आंसर है वो 4 से कम आ रहा है, then find out the number. तो आपको करेक्ट नंबर पता लगाना है. So again, using option 320, क्या करना है, जो भी ऑप्शन गिवन है उसका हाफ. 320 का हाफ 160, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, एंड other half by 4. Okay, so 160 by 6 is 26.66 plus 40. You are getting how much? 66.66. Whereas if you divide the whole number by 5, you are getting how much? 64. So the difference of these two numbers is not 4. So this is wrong. Okay. So it is better to select that number जो कि 6 से डिविजिबल हो. यहाँ पे 166 से डिविजिबल नहीं था, तो पहले हमें ऐसा ऑप्शन ट्राई नहीं करना है. सेकंड ऑप्शन देखो, 400, half will be 200 and 200. So 200 is again not divisible by 6. So skip that option. Try with C first. To learn to skip the option also. 480 का half 240 divided by 6 gives you 40. Then remaining half divided by 4 gives you 60. So total is 100. If you divide the total 480 by 5, you are getting how much? 96. So the difference is 4 short. Therefore, option number C is correct. तो इस तरह से आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. ऑलराइट. सो रोहित, रेशमा, सबका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. प्रीति का भी सॉल्व हो गया है. दैट्स गुड. Good, sir. Sir, earlier exercise also, I'm coming to the point, the set exercise A, question number 8 is, D option is nearing actually. I had noticed this. Please recollect and Exercise A. Question number. This one, sir? Yes. The equation 12x plus 1 by 4. Question number 8, sir. I'm talking about question number. Question number 8. Okay. Yeah. If you substitute 7 directly also, with both sides, it is coming 85 by 4 also. So if we substitute like 7, 12 into 7 plus 1. So 12 into 7 plus 1 is 84. 84 plus 1 is 85 by 4. And on right hand side, 15 multiplied by 7 is 90, minus 1 is 89 upon 5, plus 2 into 7 is 14. 14 minus 5 is 9. Upon 3 into 7 is 21. Minus 1 gives 20. So if we take the LCM and simplify, so 89 multiplied by 4. 15 7s are 105. Is 356 plus 9.
365 upon 20. So this is This is 50, right side is, I'm talking about 85 by 4. 18.25. Left And side, here 15 it is into 7. 85 by 4. Yes. Yeah. Both sides it's 85 coming, by sir. Both sides it's coming, sir. Right side, 15 into 7. Minus Sorry. 1 by 5. Am I right, sir? Hello, sir. Hello. Which one, sir? Eighth Okay. question. Eighth Okay, I've question. done that mistake. Right, Okay, right. okay. Then we move to that next one. Yes, sir. The students are raised, that's why yes. It's over. Right, Now we move to the next solution, sir. Thank you so much. So simultaneous solution of the equation. So in this, we are having 2 variable as well as 3 variables. But again, the best way is to use the option. Otherwise, it will take 3 to 5 minutes. But using option, it will be easy to get the answer fast. So exercise number C. If anybody is having doubt from this exercise C, let me know the question number first. So in this exercise, we are having in total 10 questions, and all these questions can be solved using options very, very quickly. So question number, let's say 2. If we talk about question number 2, 2 equations are given with 2 variables, and then we have to put the option and solve. So the result is 2. X by 2 plus y by 3 gives 2. This is the first equation. And second equation is x plus 2y gives 8. Now, here, if you observe the first equation carefully, you get a hint. What is the hint? The total is 2. If you put 2 in place of x and 3 in place of y, you will get 1 plus 1, that is 2. So it can be very quick if you think in that manner. अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट हो सकता है. तो x की प्लेस पे आपने रखा है यहाँ पे 2. So 2 by 2 gives 1 and 3 by 3 gives 1. So therefore 1 plus 1 is 2. And now put the same option in other equation also. So 2 plus 2 into 3 is 6. You are getting 8. Therefore option number C is correct. Now somebody has asked about question number 4. Okay. Now for question number 4 again, just we have to try using option. I have shown here also. If you put option number A, that is 1 by 4 in place of x and 1 by 3 in place of y. So 1 upon 16 into 1/4 plus 1 upon 15 into 1/3. How much you are getting? 1 by 4 plus 1 by 5. And if you add them, the total is 9 by 20. So this is the thing you are given in the question. So LHS and RHS both are equal. If you try putting the same option in second equation, that is also matching. So 1 upon 20 into 1/4 minus 1 by 27 into 1/3. So therefore, we are getting 4 by 45. So option number A is correct. Then Hema is asking about question number 3. See, question number 3 is exactly same as question number 2. Just see the fraction x by p plus y by q, and the result is 2.
तो जब भी आपका रिजल्ट 2 है, आप क्या चेक कर लोगे? x की प्लेस पे अगर हमने p को रखा, y की प्लेस पे अगर q को रखा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 1 + 1 गिव्स 2. So therefore p and q are the correct option. So it can be this much quick. Okay, then the next one. Hello, sir. In my Yes. experience and your experience also, just we can share this exercise C and D. Students can solve by using the options or also trial and error method. They can check it also. That is the quickest way to get the solve these solutions are also. Right. And if they have any doubt, let them raise, and further we can move to the problems of how we can solve. Just to give an idea about the word problems related to the simultaneous equations, like two variables x and y. Can you please start on Right. that aspects? That would be. We can cover more examples in the future also with that. We can, while uh, doubts clearing times, actually we can explain more. Could you agree on that part, sir, that we can proceed on the simultaneous equations, like problems how can be solved, like word problems related? Word problems, right? Yes, sir. Okay. So exercise number D is having a bit one to more variety, and then we are having the word Yes, sir. problems in two variables. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So if we talk about एक्सरसाइज नंबर डी, सी एंड डी, ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है जो आप फटाफट से ऑप्शन रखा और आंसर, इसमें आपको कुछ भी चैलेंज नहीं है, सीधा ऑप्शन पुट करो एंड गेट द आंसर. टू वेरिएबल्स वी हैव डिस्कस्ड, थ्री वेरिएबल्स में भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं हाउ टू पुट द ऑप्शन, एंड देन इट विल बी क्विकेस्ट वे फॉर यू गाइस. जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इट इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग. x/4 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/2. जहां पे इक्वल टू आ गया है तो क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही उसका आंसर है. एक बार वो पुट करके देख लो, मोस्ट ऑफ द केस में आपका आंसर मैच हो जाएगा. सो एक्स की प्लेस पे रखा आपने 4, y की प्लेस पे, एंड यही ऑप्शन आपने सेकेंड इक्वेशन में डाल के चेक किया. यू आर गेटिंग LHS इक्वल टू RHS. Therefore option A is correct. That's it. इतना फास्ट आप कर सकते हैं. Then so before moving to the word problem, let's take one. Let's show you one more case. Question number 9 we can take. xy upon y minus x is equal to 110. तो एक ऑप्शन आप इस फर्स्ट इक्वेशन में रखे देखो जिसको आपको लगता है कि वो मैच हो सकता है, राइट? तो देखो y माइनस एक्स, z माइनस वाई एंड z प्लस एक्स. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? y माइनस एक्स. फर्स्ट इक्वेशन में y माइनस एक्स है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, मतलब y शुड बी ग्रेटर. तो ग्रेटर वाला ऑप्शन पहले चेक करते हैं. y ग्रेटर किसमें है? बी ऑप्शन में. 10, 11 एंड 12. अगर आप ऑप्शन बी ट्राई करते हैं पहले, सो 10 into 11 upon 11 minus 10, you are getting 110. Satisfied. एक बार में आपका सेटिस्फाई हो गया. अब इसको वेरीफाई कर लो यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन yz. So 11 into 12 upon 12 minus 11, 132. It is again matched. And the third case, zx. So 12 into 10 upon 12 plus 10. So you are getting 120 by 22 or 60 by 11. So it is also a good match. Very nice. Very nice. It's very good. Quickly got the result. Yes, sir.
So this is also done. Now, the word problems. So see, normally what you might have done in lower classes, word problem जब भी आती है हम equations form करते हैं, but यहाँ पे एग्जाम में आपको इक्वेशन फॉर्मेशन पे कम ध्यान देना है, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करने में ध्यान देना है. कौन सा ऑप्शन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जस्ट सेलेक्ट दैट आंसर, दैट्स इट. इतना सा आप करेंगे, आपका काम विद इन सेकेंड्स हो जाएगा. ओके, so let's take these word problems type question also. So question number second एक अच्छा question है, so let me explain you that, and अगर आपका कोई और particular doubt है then let us know. So question number second from exercise E I am taking first. Find the fraction which is equal to 1/2. जो कितना आना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 when both its numerator and denominator are increased by 2. अगर हम दोनों को 2 से इंक्रीज कर दें तो आपका रिजल्ट हाफ आना चाहिए. जस्ट एड द नंबर्स एंड गेट द रिजल्ट. फर्स्ट ऑप्शन में आपने चेक किया, 3 + 2 5, 8 + 2 10, रिजल्ट इज हाफ, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट. दैट्स इट. 5 सेकेंड लगे आपको क्वेश्चन सॉल्व. Then again you can try like question number 4. 4 is again a good question. A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digit. क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएगा. 10 से 100 के बीच में नंबर है, दैट मीन्स इट इज अ 2 डिजिट नंबर. ओके, दोनों डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 5 टाइम्स ऑफ दैट डिजिट. 5 times the sum of that digit. So if you check the first option, question number 4 का first option आप चेक करते हैं 54. So 5 + 4 is 9. 9 का 5 times आपने किया 45. So it is not matching, incorrect. But अगर ये नंबर आपका 45 होता, if the option is let's say 45, then 4 + 5 is 9 and 9 into 5 is 45. So now the condition is getting satisfied and this is covered in option number C. अब साथ में एक कंडीशन और वेरीफाई करना है, कर सकते हैं. If 9 is added then the digits are reversed. तो 45 में आपने 9 ऐड किया, now the digit becomes 54, number becomes 54, so they are reversed. So all the conditions are matched. All right. Then Rohit is asking about question number 3. Okay. See, question number 3. The age of a person is twice the sum of age of his 2 sons. 5 years ago, his age was thrice the sum of their ages. So find out the present age. So present age calculate करनी. Now this is a quite different question. तो मैं इसको भी आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. So as per the question, the age of a person is twice the sum of age of 2 sons. So here we are having a person, and on the other hand, there are 2 sons. Now the age of the person is twice, ये डबल है, इस पर्सन की एज डबल है. किससे डबल है, द सम ऑफ एज ऑफ द सन्स. अगर दोनों की
एज का सम x है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी आपकी 2x. 5 years ago his age was thrice the sum of their ages. 5 साल पहले क्या रेशियो था? 3 times रेशियो था. Then find out the present age. Now this is exactly similar to example number 2. So let me explain with that. Okay, so it can be very quick for this. The age of a man is 3 times the sum of age of the two sons. So let's the equation be present age of man is x and sum of sons ages be by years. Man की एज x है एंड सन के दोनों सन की एज का सम y है. So at present what is the ratio? Man is 3 times of y. X is 3 times of y. This is your first condition. 5 year hence, 5 साल के बाद, तो +5 करना पड़ेगा. Man's age will be x plus 5. Now दोनों सन की एज 5 years से बढ़ जाएगी. So +5 for the first son and again +5 for the second son. तो दोनों सन के लिए आपने क्या कर लिया है? +5 इसमें कर लिया है. Now the ratio is twice. Now the ratio is twice. So x plus 5 is equal to 2 times of y plus 5 plus 5. Now since it is twice, so twice of y plus 5 plus 5. So this becomes the equation number 2. Now what we have to do, just substitute the value. In place of x, you can put 3y. तो x की प्लेस पे आपने क्या पुट कर लिया? 3y पुट कर लिया. So we are getting y equal to 15. तो y का वैल्यू 15 है. तो x का रिजल्ट क्या होगा? x का रिजल्ट आपका हो जाएगा 3 times 3 into 15, that is 45. So just the same way you can simplify second one. Question number 3 also. Okay, so doubts we have done. So these word problems can be solved. Most of them can be solved using your options. Sir, Yes, sir. question number 11, can you please say? Okay, sir. So question number 11, the demand and supply equations for a certain commodity are given. So first equation for demand and supply is this, that is 4 of Q plus 7 of P is equal to 17. And then the second equation is also given. Okay, so these two equations are given where P is the market price. P आपका market price है, Q क्या हो गया? Quantity. तो equilibrium price and equilibrium quantity आपको given है. Now our requirement is to simplify and get the result. तो फिर से आपको क्या करना है? ऑप्शन पुट करना है और आंसर आ जाएगा. साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट बेस्ट वे हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज यूज द ऑप्शन. इफ वी ट्राई द फर्स्ट वन. नाउ पहले क्या पूछा है? पहले पूछा है प्राइस. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी फॉर पी एंड सेकंड ऑप्शन विल बी फॉर क्यू. ओके, सो ऑप्शन पुट करने में आपको ध्यान रखना है, उल्टा पुट नहीं करेंगे. 4 multiply by 3 by 4 plus 7 multiply by 2. Now check. 3 plus 14, 17. So equation is satisfied. Similarly, you can try in second equation also. Second equation आपके पास given है. P is equal to Q by 3 plus 7 by 4. So P is 2. Q में आपने कितना रखना है? 3 by 4 upon 3. This is getting cancelled. 7 by 4. So 1 by 4 plus 7 by 4 gives 2.
So left hand side, right hand side, both have matched. So therefore option number A is verified. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay. Now, further we'll move to quadratic equation part, sir. Yes, sir. So now, till now we have completed linear equation. Now it is a time for quadratic equation. So again, 1 to 2 questions normally come from this part also. Quadratic equation. तो quadratic हम किसको बोलते हैं? Where the maximum power of the variable is 2. जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, then it is the quadratic equation. So how to simplify that, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स कैसे निकलते हैं, वो हमें समझना है. Now there are two different methods. One is the splitting method. One is the splitting method, and second one is to apply the quadratic formula. Quadratic formula, or it is also known as Sridhar-Acharya formula. So these are the two names, quadratic formula or Sridhar-Acharya formula. So now, for solving this using this method, we have to apply a formula. That is, if the format of equation is, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a format of the equation where a is the coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant. So you can put in the formula minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Just substitute the value, you will get your result. Okay, you will get your result. Then one of the main thing is, if you have to find out the sum of roots, sometime question will ask you to find out the sum of roots. Then using the same equation, you can find out the sum of roots. What is the formula? It is minus b upon a. b का मतलब है coefficient of x and a का मतलब है coefficient of x square. So this is the formula for sum of roots. If we have to calculate the product of roots, it will be c upon a. Product will be c upon a. So let me show you how can we solve one question. That is related to nature of roots. We can find, sir. Okay, so first I will cover the nature of roots. So let us cover the first nature of roots. Now, the formula we have written. So in that formula, inside the root, what is written? B square minus 4ac. So this b square minus 4ac is known as discriminant. In short, we say d. Now, by seeing the value of d, we can judge the nature of root. d की वैल्यू को देख करके आप रूट का नेचर पता लगा सकते हो. कैसे पता लगा सकते हो? If you see the first part, b square minus 4ac is equal to 0. अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, अगर ये वैल्यू 0 है, तो आपका रूट कैसा आएगा? रूट विल बी रियल एंड इक्वल. इक्वल कैसा आया? आपका फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट. रूट के अंदर का वैल्यू तो आ गया 0 अपॉन a. So therefore this whole part is removed. Just what is left? माइनस b अपॉन a. That's it. तो दोनों वैल्यूज क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी. So रूट विल बी रियल एंड इक्वल. रियल क्यों है? रूट के अंदर वैल्यू नहीं आ रही है आपकी, एंड वैल्यू आपका इमेजिनरी नंबर नहीं है बेसिकली.
इक्वल क्यों है? बिकॉज देर इज ओनली अ सिंगल पॉसिबल वैल्यू. सेकेंड केस, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव. अगर रूट के अंदर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट इज पॉजिटिव, देन द रूट्स विल बी रियल. तो रूट्स आपके होंगे रियल. एंड सेकेंड विल बी अनइक्वल. अनइक्वल क्यों होंगे? बिकॉज आपको एक बार प्लस करना है, दूसरी बार माइनस करना है. सो यूजिंग प्लस यू विल गेट हायर वैल्यू, यूजिंग माइनस you will get smaller value. So two different set of values will be available. So it is unequal. If b square minus 4ac is less than 0, अगर ये 0 से कम हो जाता है, that means रूट के अंदर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव. एंड रूट में नेगेटिव वैल्यू मतलब इट इज आयोटा, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर. तो इसलिए हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी. तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे इन द थर्ड केस. फोर्थ केस, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर वैल्यू रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो के अलावा कोई दूसरा वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका नेचर कैसा होगा? रियल रूट होंगे, रेशनल भी होंगे बिकॉज रूट के अंदर वैल्यू नहीं आ रही है, एंड दे विल बी अनइक्वल. लास्ट वन, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आपके रियल है, इरेशनल. इरेशनल का मतलब क्या? रूट में आपका आंसर आएगा. योर आंसर विल कम इन रूट, इसलिए वो इरेशनल है. एंड देन Otherwise, अनइक्वल, imaginary roots अनइक्वल भी बोल बिकॉज ऑफ सकते हैं प्लस सर. एंड माइनस. We can say imaginary roots also. यस सर. So these are the three things. In the examination point of view, sir, the nature of the roots are also very important. Without Right, sir. by solving the discriminant only, d value only, we can identify whether the quadratic equation having the real or imaginary or equal roots. So we can real and equal, right, sir? Yes. Please proceed, sir. Please. Okay, sir. So Thank you now, so much. if we talk about one more important term, एक important term है आपके सामने, वो है conjugate pair. ये भी क्वेश्चन कई बार आपके सामने आता है. Conjugate pair. Conjugate pair का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन ने बोल दिया एक रूट आपका 2 + √3 है, इफ वन ऑफ द रूट इज 2 + √3, देन ऑटोमेटिकली अदर रूट विल बी 2 - √3. तो इस टाइप के पेयर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर. तो अगर आपको एक रूट दे रखा है, दूसरा आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द साइन. प्लस की जगह माइनस या माइनस की प्लेस पे प्लस. So if m plus root n is the one of the root, then of course the other root will become m minus root n. So this is the conjugate pair. Then कुछ और शॉर्टकट कई बार क्वेश्चन में आपको हेल्प करता है. अगर क्वेश्चन में लिखा है वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, एक रूट दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है. एक रूट 4 है तो दूसरा क्या हो गया? 1/4. 1 is 2, अदर विल बी 1/2. सो जब भी ऐसा होगा उस केस में द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1. प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1 whenever there is a condition for reciprocal. So if one root is a, other will be 1/a, so product will be equal to 1. And if one root is equal to other root but opposite in sign, दोनों रूट्स इक्वल है बट साइन अलग अलग है. इफ वन रूट इज a, other will be -a. So in that case sum will be 0. सम क्या हो जाएगा आपका? 0. तो ये पैटर्न, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज काम आती है आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने. One more thing, sir. यस सर. If we know the sum of the roots and product of the roots, how we can express the
quadratic equation. That is also an important thing. Can you Yes, please sir. come to that also? Right, Then, sir. So using the sum and product, we can find out the quadratic equation. Yes, this is the formula which is written here. X square minus sum of roots, put x, plus product of roots, and then equal to 0. Let's say the sum of roots is 5 and product of root is 6. Then what will be the equation? So it will be x square minus, in place of sum, put 5, so 5x, plus put the value of product 6, and then equal to 0. So nice. x square minus 5x plus 6 equal to 0. Very good, sir. Thank you. Sir, one thing. Yes, Sorry sir. to disturb you. And the first question, we can move to the exercise questions, sir. Also, the students can be get confidence also when we solve the and exercise difficult sums only. These questions are all important for the examination point of view also. Right, sir. Especially in the quadratic equation, nature of the roots, they have to remember what is the real, equal, and imaginary. Right. Second one is the sum of the roots, products of the roots, if they have given. Based on that, finding the quadratic equation also. And now 1, 2, 3 questions are there. These are sometimes they face the difficulty. And this one, question number 1, they can find easily that based on the discriminant value, and they identify the nature of the roots, or also find the value of m also. Just please explain on the first one and second and third one. That Yes, students, 1 second. yeah, please. Okay. Thank you so much. Please move on. So let's move on the exercise number F and question number first. Right. So question number first, if the roots of the equation are equal. क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया आपको रूट्स इक्वल है, तो जब रूट्स इक्वल है तो व्हाट वाज द कंडीशन, हमने ऊपर कंडीशन पढ़ा था b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन व्हेन रूट्स आर इक्वल. ओके, so now as per the given equation we have to substitute the value. So your given equation is 2x square plus 8x minus m cube. So value of a is 2, b is 8, and c is minus m cube. So we have substituted in b square minus 4ac. So on substituting, what we are getting 64 plus 8m cube. Therefore, the value of m is minus 2. So m का value आपका कितना आ गया? minus 2. So just by using this discriminant property, we can get the result very quickly, very easily. Now, the second one, clearly it can be done using options. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ऑप्शन से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड. ट्राई विथ ऑप्शन ए फर्स्ट. ऑप्शन ए में ये लिखा है 0 and 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 0. So 2 to the power of 2 into 0 is 0 plus 3. So 2 cube minus 3 square and then 2 to the power of 0. So here basically what we are getting, 2 cube is 8, 3 square is 9 and plus 1. So we are getting 0. So 0 equal to 0. Left hand side, right hand side both are equal. So 0 is satisfying. But not only 0, we have to check with 1 also. तो 1 को भी चेक करते हैं क्या 1 से आपका आंसर मैच होता है. So 2 to the power of 2 plus 3, 5 minus 3 square and then 2 to the power of 1 plus 1. So this time we are getting how much? 32
minus 9 into 2, 18. Now this time we are getting 14 and it is not equal to 0. That means we have to try with other options also. दूसरा ऑप्शन के साथ में ट्राई करके देखें. Since one is not matched, we can go ahead with option number C. Better, sir. Yes. तो C के साथ आप ट्राई करते हैं. So 2 to the power of 2 into 3 is 6 and 6 plus 3 9 minus 3 square into 2 to the power of 3 and then plus 1. So how much we are getting this time? So again the value is bigger. 2 to the power of 9 is 512 and here it is 9 into 8 72. So we are not getting the correct answer. Now let's try the D option. It is minus 3. So 2 to the power of minus 6 plus 3, then 3 square, then again 2 to the power of minus 3 plus 1. So this time we are getting how much? 2 to the power of minus 3, then 9 into, this is 2 to the power of minus 3 and plus 1. So 2 to the power of minus 3 is how much? 1 by 8 minus 9 by 8 and then plus 1. So overall we are getting minus 1 plus 1 equal to 0. Hence left hand side and right hand side both are equal. So therefore D option will be correct. Yes, sir. Option D is correct. Yes, sir. Sir, now we move to the question number 3. This kind of question is very important for the examination point of view. Students Right. are asked several times in this kind of queries, sir, also. Can you please explain this some? Okay. How they can So assume question number 3. X, and that is also be important. And based on that, a quadratic equation can be. Yes, sir. So question number 3. दिखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, but it is not actually that difficult. एक एक पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बार बार रिपीट दिख रहा है, राइट? सो नाउ लेट दिस द होल क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स. ये पूरा आपका एक्स है एंड ये कहां तक जा रहा है? अप टू इनफाइनाइट. इफ यू हाइड द फर्स्ट पार्ट, अगर आप फर्स्ट पार्ट को हाइड कर लेते हैं एंड सिर्फ इस पोर्शन को देखते हैं, सो नाउ दिस पोर्शन अगेन लुक्स लाइक अवर क्वेश्चन. ये पोर्शन ही पूरा क्या लग रहा है? अपने क्वेश्चन की तरह लग रहा है. तो क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स. तो इस पूरे को ही आप क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं. तो जैसे ही इसको आपने एक्स लिखा, इट विल बिकम एक्स इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स. एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स. नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड. अब इसको इजिली आप एलसीएम लेके एंड सॉल्व कर सकते हैं. तो एलसीएम इज x. So 4 of x plus 1 is equal to x. On cross multiplication, x square minus 4x plus 1 है, तो यहाँ आके आपका minus 1 बन जाएगा and then equal to 0. x square minus 4x minus 1 equal to 0. Now you can apply the quadratic formula to simplify. So x is equal to minus b. So minus of minus 4 plus minus root b square minus 4a and then c is minus 1 upon 2a. 2 into a. The value of a is 1. So 4 plus minus. Now inside root, what is the result? 16 plus 4 20. We can take 2 as common. So 4 plus minus root से 2 बाहर ले लिया आपने, क्या बचा? 2 root 5
upon 2. Take 2 as common. So 2 and 2 is getting cancelled. So the final answer is 2 plus minus root 5. 2 plus minus root 5. This is our final answer. Okay. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अप टू इनफाइनाइट, उसको आप x लें एंड देन इट विल बी इजीली सिंप्लीफाइड. Sir, further, we can take the answer 2 plus or minus root 5 only, 2 plus or 2 plus root 5 only. Yes, 2 plus minus root 5. So option number C will be correct. So now, so we are having a lot more variety now. Let's move further. So the way which we have understood in question number 1, 2 and 3, all these three were totally different questions. And the pattern we have understood कि किस pattern से आपको ये सारे questions को solve करना है, simplify करना है. So let's take some more variety. So question number 2. Question number 2 को लेते हैं. डाउट भी पूछा है किसी ने. Question number 2. If the roots of the equation exceeds the other by 4. So एक रूट दूसरे रूट से 4 से exceed करता है. Find out the value of m. So in such cases, if one root is alpha, then the other root will be alpha plus 4. आप कुछ भी ले सकते हैं x, x plus 4, alpha, alpha plus 4. Okay, this is the roots. Then what will be the product of roots? So we have written that product of root is c upon a. C in this question is m, a is 1. So product of root alpha multiplied by alpha plus 4 is equal to m upon 1. This is equal to m upon 1. Now let's simplify. Second thing is how to get the result. If we talk about the sum, sum is minus b upon a. So what is b? B is minus of a upon a is sum is equal to 8. So product is m, sum is 8. So as per the question, sum of roots alpha and alpha plus 4, it is equal to 8. Therefore, 2 alpha is equal to 4. So value of alpha will be 2. So one root is 2, other root will be 2 plus 4, that is 6. So these are the two roots of equation. But question is not asking about the two roots of the equation. Question is asking about the products. Okay, that is m. Question पूछ रहा है आपको m के बारे में. So use the product equation now and find the value of m. So product alpha and alpha plus 4, 2 and 6, that is equal to m. Therefore value of m will be 12. So in this way you can calculate m. So m को आप easily calculate कर सकते हैं. Also, it is not at all necessary to always use the quadratic formula. Again, here you can put the option and get your
और रिजल्ट ऑप्शन रख के भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इक्वेशन गिवन है, ऑप्शन पुट करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 7 है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, ऑप्शन पुट करो, गेट द रिजल्ट। सेम विद क्वेश्चन नंबर 6। So in all these questions, it is always better use the option and get the result very, very quick. Sir, question number 10 is a by option by based on the discriminant they can get the solution. Yes. B So square. question number 10 is basically Ah, L minus m by 2x square, then n plus m by 2x plus m is equal to c. And it has got the two values of x to satisfy the equation. Okay, this is given here. Now, which one is the correct option? This you have to find it out. So here, this is basically a different question. So I think इसमें कुछ ये misprint आ रहा है, ये 2 and L. no, actually it is a like actually L they have typed like that actually typographical something they have put like that. Okay. So right hand side is this will be 0, right? Ah, yes, 0. So L minus m by 2 x square, L plus m by 2 x, and then plus m is equal to 0. 0. Now two values are there. Now two values कब होती है? तो उसके लिए आपको पता है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट कैन बी इवन पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। देन द टू वैल्यू, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, इट विल बिकम इमेजिनरी। तो इमेजिनरी ऑप्शन इज नॉट देयर, तो इट विल नॉट बी इमेजिनरी। सो द क्वेश्चन हैज गॉट the two values. Now, most of the option is having one. So one is getting satisfied with this. One इसको satisfy कर पा रहा है. And second one is, this is like a complex kind of options. 1 upon L minus M, then M upon L minus M. So we have to look here what will be the correct option. So if you see the formula, minus B plus minus root of B square minus 4ac upon 2a. So for माइनस बी के लिए आपने यहाँ पे इसको अलग रख दिया पहले, माइनस ऑफ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एल प्लस एम बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो एल प्लस एम स्क्वायर बाय 4 माइनस 4ac. A is L minus m by 2 and C is m. And then whole upon 2a. So now we have to simplify a bit in the root. तो रूट वाली वैल्यू को पहले अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको. So L square plus 2lm plus m square by 4 minus this we can cancel first. So 2 of lm and minus 2m square. So what is left?
एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, टेक द एलसीएम, सो माइनस 8lm and plus 8m square upon 4. So 4 can be taken as out, it will become 1 by 2. So L square minus 6lm and plus 9m square. So this can be a whole square. ये किसका whole square है, ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा. So L minus 3m का whole square. अगर आप L minus 3m का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा, L स्क्वायर माइनस 6lm एंड प्लस 9m स्क्वायर. सो दिस इज 1 by 2 L minus 3m. तो इस रूट को आपने पूरा सिंप्लीफाई किया और ये रिजल्ट आपके सामने आ गया. ओके, so let's put here L plus m by 2 plus minus 1 by 2 L minus 3m and then whole upon this. So 2 and 2 are getting cancelled, so we can write it down L minus m. Now one time we have to do the addition, other time subtraction, and you will get the two results. So 1 by 2 पूरा की पूरा आप कॉमन ले सकते हैं. अगर आप पहले प्लस करते हैं, if we are doing the addition, 1 by 2 is taken outside, L plus m plus L minus 3m upon L minus m. तो क्या बचेगा आपके पास, 1 by 2 2L minus 2m upon L minus m. So both are same, both are exactly same, you can cancel and the result is 1. So 1 आ चुका है. Secondly, you have to take minus sign. So 1 by 2, then L plus m, this time taking minus sign. So minus of L and plus of 3m upon L minus m. So what is left now? L and L is getting cancelled. So 4m. So 2m upon L minus m. Yes, option A is correct, sir. Thank you. Very Option big number. question actually. Logically, it's a very and explained very well, sir. This one. Thank you. Can you please explain this just for repeat this? Sir. Okay, sir. So let's repeat this so that you can again understand properly. So ये question थोड़ा सा lengthy because of algebraic calculation. So question है, आपको एक quadratic equation दिया है and we are solving this using quadratic formula. Okay, तो quadratic formula सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया. Now substituting the value of b. b कितना था आपका, जो x का कोफिशिएंट है वो आपका b है, b हमने पुट किया. Then we have done the b square minus 4ac. ओके, तो 4 and 2 यहाँ हमने थोड़ा कैंसिल कर लिया, 2 and 2 कैंसिल कर लिया. जितना सिंप्लीफाई हो जाए, जितना कैंसिल हो जाए वो हमने पहले कैंसिल किया. अभी देखो रूट के अंदर वैल्यूज ज्यादा है, तो पहले हमने रूट को साइड में अलग से लेके सॉल्व किया. तो रूट में क्या है हमारे पास, L plus m का होल स्क्वायर, वी हैव ओपन द ब्रैकेट एंड डन द स्क्वायर, माइनस 2 ऑफ L minus m into m. तो ब्रैकेट को ओपन किया एंड देन मल्टीप्लाई कर लिया. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टेकन द एलसीएम. अभी हमने एलसीएम लिया, तो अपॉन में आ चुका है 4 एंड न्यूमरेटर में एवरीथिंग इज ओपन नाउ. कुछ चीजें एडलेस हो गई, एडलेस होने के बाद दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एंड रूट 4 बिकम्स रूट ऑफ 2 व्हेन इट कम आउटसाइड. तो बाहर आके क्या बन गया, 1/2. नाउ L स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 9m स्क्वायर, ये क्या है, होल स्क्वायर है. किसका होल स्क्वायर है, L minus 3m का होल स्क्वायर है. तो जैसे ही रूट से बाहर आया, स्क्वायर एंड रूट गेट
कैंसिल। अब यहां तक करने के बाद रूट को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज प्लस एंड माइनस। तो एक बार आप ऐड करेंगे, सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने ऐड किया, फर्स्ट टाइम आपने ऐड किया, ऐड करने पे 2l minus 2m आया, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अगेन l minus m, everything got cancelled and the result is 1. So this is the answer. सेकेंड आंसर निकालने के लिए आपने माइनस का साइन यूज किया, l cancel and you are getting 2m upon l minus m. So these two are the rules. So thank you so much. Now we can move to the cubic equations, and after that, students' queries we can just take. Okay, sir. So now the word problem and cubic equation. So if there is any doubt in exercise H, let me know, and I will be taking cubic equations as well. Okay. So Gaurav ji, Sir, good afternoon, this sir. is good afternoon. Yeah. Can Our you time- revise everything, whatever you have done from day one? Sir, Gaurav yes, sir. our chairman board of studies has joined, and he is requested to explain the first chapter and just throw on the ratio, proportions, indices. Now come to this also. Sir wants to know about this. Yeah. So equations. In the last section, you have explained about the ratios, proportions, equations, and logarithms. Now Right, sir. today's section is about the equations. Equations. Our chairman wants to actually explain about the whole section, what from the beginning of the sessions, what you have explained also. Please throw our Okay, light sir. on the ratio, proportions, indices, and logarithms. Okay, sir. So actually, sir, we are taking the doubt session. So if we talk about the ratio and proportion. Gaurav ji, you close the PPT. You explain from your mind. Okay, sir. Sir, which one? Like ratio and proportion? Yeah. Ratio, proportion, law of indices. You first close this PPT. Yes, sir. I have taken the blank Close screen. the screen. I have taken the blank Even screen close now. the blank. Blank is also not required. Okay, sir. See, my desire is we should explain the subject as we are explaining to layman. A totally layman. Right. Huh. So, okay, so let us talk about some ratios and proportion. So ratio and proportion अगर हम देखें तो नॉर्मली हम इसको हमारी लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो एटलीस्ट 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। कम से कम हमें 2 वैल्यू चाहिए, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां हमें उसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड के साथ हमने एक बिजनेस शुरू किया, एक पार्टनरशिप के साथ में शुरू किया, तो जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उस वक्त हम कुछ डिसाइड करते हैं कि उस बिजनेस का जो भी कैपिटल होगा वो हम किस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए भी एक रेशियो डिसाइड होता है। तो शुरुआत में लेट्स टेक कि हम 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, एंड दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जितना कैपिटल ए लगाएगा उतना कैपिटल बी भी इंट्रोड्यूस करेगा। इफ ए इज इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख रुपीज, देन ऑफ कोर्स बी विल आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख। लेकिन अगर रेशियो ऐसा डिसाइड होता है, अगर मान लेते हैं ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख एंड बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज, तो हमारा रेशियो कितना बन गया, 1 लाख इज टू 2 लाख। zeros will be cancelled, तो क्या क्या रेशियो आया, 1:2। 1:2। तो 1:2 के रेशियो में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हमें यहाँ क्या समझनी है, जब भी हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो यूनिट मस्ट बी सेम। सेम यूनिट दोनों का होना चाहिए। अगर हम ए के अंदर रुपीज में ले रहे हैं तो सेकंड वैल्यू भी किसमें होगी, आपकी रुपीज में।
सो रेशियो के अंदर द फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट। पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंड जो दूसरी टर्म आती है दैट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। दैट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। किचन के अंदर भी अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि अगर आपको चपाती बनानी है, चपाती बनाने के लिए आटा लगाना पड़ेगा, व्हीट को सॉल्ट के साथ, वाटर के साथ में मिक्स करना पड़ेगा, तो वहां भी हमें क्या पता होना चाहिए? एक रेशियो पता होना चाहिए कि हमने व्हीट फ्लावर कितना लिया है, 200 ग्राम्स, सॉल्ट कितना लिया है, 10 ग्राम्स। तो 200 ग्राम एंड 10 ग्राम दोनों की जो यूनिट है दैट इज सेम। तो 200 को जब हम 10 के साथ में रखेंगे, कंपेयर करेंगे, जीरो विल गेट कैंसिल। कितना बचा आपके सामने? 20:1। तो 20 यूनिट्स हम लेंगे किसका? व्हीट फ्लावर का। एंड 1 यूनिट हम किसका लेंगे? सॉल्ट का। सो दिस इज बेसिकली अ रेशियो। Gaurav ji, यस सर। can you explain me the whole syllabus? How I should approach the subject? What is this subject? Consider me a student of arts or something who has never done any mathematics. राइट सर। ओके। सो सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, दैट इज बेसिकली लाइक नॉट एट ऑल, लाइक नॉट मच डिफिकल्ट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और हम ऐसा भी नहीं कहेंगे इजी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स गिवन है, हमारे सिलेबस में गिवन है, वो इस तरह से गिवन है जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आने वाले हैं। स्पेशली अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आगे जाकर के जो हमारे प्रैक्टिकल फील्ड्स है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ रेशियो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अ रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूसेज होता है? जब हम हमारा बिजनेस करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर जैसे हमने डिस्कस किया, एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारी फर्म में पार्टनरशिप नहीं, आपका अगर कोई क्लाइंट भी हमारे सामने आता है, तो क्लाइंट की फर्म भी कैसी हो सकती है? एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। और वहां पर हमें ये सारी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट में शेयर देना है, उसका कैपिटल का रेशियो कितना हमें रखना है। तो प्रैक्टिकल इसका यूसेज रहता है। दूसरा जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस बेसिकली जी एक ऐसा चैप्टर है जो कि पावर्स के साथ में डील करता है। पावर्स के साथ इन द सेंस, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे नंबर 5 को ऐड करना है 20 टाइम्स, नंबर 5 को ऐड करना है 20 टाइम्स, एक ऑप्शन तो मेरे पास क्या है? मैं ऐड करता रहूंगा 5 + 5 10 +5 15 +5 20 एंड सो ऑन। लेकिन ये तरीका बहुत लेंदी है। अगर मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस का रूल लगाया तो मेरा आंसर विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा। कैसे आएगा? 5 को 20 टाइम्स ऐड करना है, सिंपली 5 × 20 गिव्स 100। तो सीधा आपके पास टोटल कितना आ गया? 100। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस हमें एक्सप्लेन करता है कैसे बिगर कैलकुलेशन को, बड़ी चीजों को हमें शॉर्ट में यूज कैसे करना। सिमिलरली कुछ पावर्स ऐसी होती है जो हमारी नेगेटिव होती है। पावर्स में अगर नेगेटिव साइन है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और एक लेमैन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है माइनस के साथ। जहां भी किसी भी इक्वेशन में, किसी भी नंबर में अगर माइनस साइन आ जाता है ना, तो स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस हमें इसको सिंप्लीफाई करना सिखाता है। अगर 2⁻⁻1 है तो माइनस आते ही हमें नंबर को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो 2 विल बिकम 1/2। जैसे ही 2 में -1 लिखा है तो नंबर विल बिकम रेसिप्रोकल एंड इट विल बिकम 1/2। अगर 2 पे -2 लिखा है then it will become 1/2 square, that is 1/4। तो नेगेटिव पावर्स के साथ हम ऐसे डील कर सकते हैं। तो इंडिसेस का पर्पस ये। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास में आता है दैट इज लॉगरिथम। लॉगरिथम का अगेन पर्पस है जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, उसको आसान बनाना, उसको सिंप्लीफाई करना। जैसे अगर मैंने कहा 2 की पावर 2,
इजी है, आंसर इज 4। 3 की पावर 2, आंसर इज 9, बहुत इजी है। लेकिन अगर मुझे निकालना है 2 की पावर 1.2, अब 2 की पावर 1.2 ना तो मैं डायरेक्टली कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल सकता हूं, ना कोई कैलकुलेटर में ऐसा बटन है जिससे मैं निकाल सकता हूं। साइंटिफिक कैलकुलेटर है बट वो हमारे काम का नहीं है। तो लॉगरिथम एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो लॉगरिथम क्या बोलता है कि जो पावर में आपको लिखा है 1.2, उसको क्या करो, आगे लेके आओ। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ नहीं, लॉग ऑफ 2 के साथ। अब लॉग ऑफ 2 क्या होता है? तो लॉगरिथम की पूरी कंप्लीट टेबल बनी है जो कि पूरा सिंप्लीफाइड है। तो लॉग 2 की वैल्यू हमें वहां से देखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ में, एंड उसके बाद हमारा एक रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद एक स्टेप और होता है, और वो होता है उसका एंटी लॉग करना। अगर हम एक स्टेप आगे गए हैं तो वापस एक स्टेप में पीछे भी आना रहता है। तो यूजिंग दैट एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग हमने जैसे ही निकाला और आपका आंसर आपके सामने हो। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है कौन? लॉगरिथम। फिर बात आती है हमारे पास में इक्वेशंस की। तो इक्वेशंस प्रैक्टिकली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे डिमांड सप्लाई की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं, मार्केट से गुड्स की डिमांड आ रही है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को मीट करना पड़ता है हमें फॉर द इक्विलिब्रियम। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल आते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Dr. और वही Ravi, चीज हमें मार्केट के अकॉर्डिंग Yes, करनी sir. है। यस you सर। may carry on. I am exiting. I will study on my own. जी sir. And Dr. Ravi, we should also take a call because the student may be from South. Whether we should use Hindi at all in our sessions. No. Yes, sir. We can take. No, I am requesting you. You take your own this thing. Plus, Yes, sir. I Definitely. want, my desire is, I was seeing the study material also. Mhm. Much description is not written. We are just starting with the questions. So any subject can be understood first if we understand little bit about the subject. Sure, sir. I'm seeing the ratios, proportions chapter also. There should be some description, some we should tell the students how this will be useful in the business life. Anyway, we can discuss all this one to one. Currently, you can carry on the class Thank you, sir. whatever way you want to Yes, do. sir. Thank you Thank for you. your valuable advice, sir. And we must, promote this class. 16 students, 16 are including all of us, including Mr. Ajit, including Mr. Manish. 5 of us, that means only 11 students have joined the class, which is, we have about 2 lakh students in foundation. So this I have been repeatedly saying, please promote LBC, make out a separate circular, make the whole timetable. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Gaurav, thank you for your nice Thank you. explanation, and move ahead of further cubic equations how can be Okay. solved also. Thank you so much. Please move ahead. So word problems and then cubic equations. So we were basically talking about the word problems. So these word problems can also be solved using options as well as equation. But the shortest way is the option method, which we have to again use in our examination. So let me show you one question. Let's take question number 6. It's a good question. Divide 50
into two parts. 50 को two parts में divide करना है such that the sum of their reciprocals is 1/12. Okay. Now, पहले आप option को जब भी देखेंगे, whenever you see the option, you will feel that option A, B and C are quite complex and option D is quite easy because वो 10 के multiple में. तो always आपको आसान option या 10 का multiple, 5 के multiple वाले option को पहले try करना है. So always try that option first. So 20 and 30 को जो आप try करेंगे, you have to find out the sum of reciprocal. So 1/20 plus 1/30. What will be the LCM? Your LCM will be 60. So 3 plus 2, 5/60. That is 1/12. 1/12. So that's it. You will get the answer, option number D. So selecting the option is also a good way to get the answer in one shot. Now comes the cubic equation. So for cubic equation, again, the one and the best method is to put the option and get your result. Okay. So let's see question number first. The solution of the cubic equation is given by which triplet? Now you can see that 1 is common in two options. -2 is common in two options. So just try with any one number which is easy. पहले आपको आसान नंबर के साथ में शुरू करना है. तो सबसे पहले लेट से आपने 1 के साथ में स्टार्ट किया. तो जैसे ही 1 को आप पुट करेंगे इन द इक्वेशन, तो 1 क्यूब इज 1 माइनस 6 into 1 square is 6 plus 11 into 1 is 11 and minus 6. So now you have to check whether you are getting it or not. क्या आपका रिजल्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, वी आर गेटिंग इक्वल टू 0. तो 1 इज सेटिस्फाइंग. 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 कहां पे है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के अंदर है. इसका मतलब सी एंड डी तो आपका हटा देते हैं हम. या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है. नाउ लेट्स ट्राई विद -1. -1 के साथ अगर ट्राई करते हैं, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, you are getting -6. Then 11 into -1 is -11 and then -6. So -1 पुट करने से आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है. So option A is wrong. So therefore option number B will be correct. B ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा. अगर आपके पास टाइम बचता है तो B की कोई भी एक वैल्यू और डाल के आप चेक कर सकते हैं. अगर आपने 2 डाल के चेक किया तो भी 0 आ जाएगा, 3 डाल के चेक किया तो भी आपका 0 आ जाएगा एंड इट विल मैच. So in this way we can solve the cubic equation questions also. So any particular question or doubt in this exercise? Then you can ask, guys. Then one of the also way to solve the question is using the division method. आप उसको division करके भी solve कर सकते हैं. Now division कैसे करना है? Let's do this with the help of question number 6. Question number 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सॉल्व करवा देता हूं. It says the roots of the equation are -1, -1, +1. Now -1 is getting repeated 2 times, in B option 1 time, in C option 3 times. So for this you have to solve using this division method. तो आपको यहाँ division method काम में लेना ही पड़ेगा. कैसे लेना है? So if x equal to 1 is a factor, अगर x equal to 1 एक factor है, that means x minus 1 will be divisible by this equation. तो x minus 1 क्या होगा? इस इक्वेशन से डिविजिबल होगा. तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. सो मैंने इक्वेशन को लिखा है यहाँ पे. सॉल्व क्वेश्चन को मैं आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. x³ प्लस
x square minus x minus 1. Now we are dividing it x minus 1. तो x minus 1 से जैसे आपने डिवाइड किया, x क्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को x क्यूब बनाना है, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. You have to multiply by x square, so it will become x cube, and then 1 into x square become x square. So what is left now? 2x square, and this minus x will come down. So this is left. फिर से आपको क्या करना है, x को 2x square बनाना है, तो multiply by 2x. तो पूरे इक्वेशन को आपने 2x से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, व्हाट इज लेफ्ट, x minus 1 is left. Now x minus 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया, you will get 0. So what we have concluded, x minus 1 multiplied by x square plus 2x plus 1. And this is basically x plus 1 whole square. So therefore, the final answer will be, compare each and every one with 0. So x equal to 1, x equal to minus 1, and x equal to minus 1. So these three are your answers. So in this way, you can select your correct option. So correct option आपका इससे आ चुका है, option number A. All right, everyone. Any queries, please? So cubic equations also done. I request students, they may send by queries by my mail ID also, nvravi@ica.in, or they can call me to the office landline number 0120 3045 949. Yes, sir. सर एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्या करना है? एडिशनल कैसे? क्वेश्चन बैंक पे बाद में डिस्कस करते हैं. जो भी क्वेरीज रहते मैं आपने पहले इसमें ध्यान करो. दिस इज द बेस्ड ऑन द एडिशनल क्वेश्चन बैंक to practice more number of questions actually. First, you concentrate on the questions, all examples and relevant concepts thoroughly, and all exercise questions. After that, when you are confident, come to the if you did not able to get any answers, please contact me also by sending mail, or you can contact me my office landline number also. Okay. Sir, just Yes, now sir. come to the entire brief of this equations chapter also. Equations means here we can write the unknown variables can be expressed in the form of mathematical equations form. That is the basic idea of the equations. We are equating the values actually. The unknown values may be x or y. We can express in the mathematical format actually. First one is the linear equation ax plus b form. Then after that, we can find out the trial and error methods or also be by solving these equations or also be. Next one is the equations can be by eliminating methods or also be we can solve the answers or also be. Now what kind of questions actually can be asked? Mr. Ujma Azad, please tell me, please, what is your query? Hello. Yes, Uzma, you can unmute and ask the question. Please. आप बात कर सकते हैं बेटा. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Sir, I have a doubt in chapter 1 additional question. Okay, but now we are discussing about the chapter 2 equations actually. You can send me the query. Just I had already given my mail ID also. Please note down nvravi@ica.in. You can send me and
or you can call to landline number of the institute 012030454949. Because we are talking about in this section equations topic, it may be disturb the flow of the faculty also. Okay, sir. ठीक है बेटा, please send me my mail ID already given. Sir, you please just explain about this entire crisp of this today's lecture, actually just Summary. Okay, sir. summary. So, Anybody wish to ask, please raise the otherwise. so anybody, if you want to ask something, you can raise your hand now, or I'm like summing session. So if anyone, one or two questions, let us know. So overall, we are into concluding the session. So overall, what we have completed today is the equations topic. The first thing was the simple equation in the format of ax plus b, जहाँ पे एक single variable है. You can simplify the equation using transformation method and get the value of x. After that, we have done the two variables using again the option method, the best way method. You can get the value of x and y. Then after that, we have done the quadratic equation. So quadratic equation किसे कहते हैं? When the maximum power of the variable is 2, it is known as the quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमने अच्छे से समझा है, उस पर क्वेश्चन भी किए हैं. -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. ये आपका फॉर्मूला था. और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो उसमें काम में आती है, दैट इज सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं -b अपॉन a, प्रोडक्ट कैसे आता है c अपॉन a. तो ये सारी चीजें हैं. प्लस इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन के लिए हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. इससे आपका इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज थी, वो था नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर अलग अलग हमने कंडीशन देखी कि कहाँ पे रूट्स रियल है, इक्वल है, कब इमेजिनरी होंगे, कहाँ पे रेशनल और इरेशनल होगा. ऑल दोज क्लासिफिकेशन वी हैव covered. Okay, so equations chapter we have covered thoroughly. बस लास्ट में एक ही चीज है, ऑप्शंस मेथड के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है कि किस ऑप्शन को आप पहले ट्राई करें एंड ऑप्शन को फास्ट कैसे ट्राई करें. ओके, इन दो चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा. बहुत सारे केसेस में इवन लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर मैच होता है. तो दिस विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशन. All right, guys. तो पहले आप सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करें, उसके बाद में ही एडिशनल पे जाना है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. एक बार खुद की हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करें. जब सारे हो जाए उसके बाद आपको एडिशनल पे जाना है, उससे पहले नहीं जाना. ऑलराइट सर, एडिशनल क्वेश्चंस बैंक वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है या नहीं, इम्पोर्टेंट है या नहीं? जो है आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं? एडिशनल क्वेश्चन बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं? एडिशनल क्वेश्चन बैंक का मतलब है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको ऑफकोर्स करनी चाहिए. लेकिन कब करनी चाहिए? जब आपको पहले एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल पे कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद. अदरवाइज क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट पहले मतलब एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन किए एंड कुछ स्किप कर दिए और सीधा एडिशनल पे जंप करते हैं, और वहां जंप करते कॉन्फिडेंस लूज आपको कॉन्फिडेंस के लिए पहले एक्सरसाइज बेटर है ऑलवेज पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स को फॉलो. मिस्टर रोहित, यू हैव सम क्वेरी, प्लीज टेल. सर एडिशनल क्वेश्चंस एकदम एक्सरसाइज से हट करके हैं. हट करना कोई नहीं बोल रहे हैं हम, नहीं. हमने पहले कंसंट्रेशन करने के लिए क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, सभी एग्जाम्पल सम से और एक्सरसाइज सम से एक्चुअली
Additional is just for the practicing the entire material, practice purpose के लिए click actually. That means when you are not able to, additional sums are little bit higher than actually it takes time also be. Some of the questions are very lengthy also be. In some cases only, I'm talking about, not in all the classes, The additional questions are given in the some chapters only, not in every chapters are also be given actually. If you look at the entire study material also. Okay. Okay, Yes, Rohit? yes. Yeah. Who are raised? Mr. Gaurav Gupta? Garv Gupta, you can ask. Yeah. सर सीए के एग्जाम के फीस कब कब खुलेगी? This kind of things related to examination, and you can ask the examination department only. We can't. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Mr. Rohit, anything you wish to say? No, sir. No, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for students who have joined and asked the good questions, sir, also. Yeah, Mr. Joy, Rohit, Gaurav Gupta, and whomsoever asked the questions, we can be thankful to them. And you can reach to us by sending mail also, be nvravi@ica.in also. You can call to our landline number 0120 3045 949 also be. And today's section was nicely handled by our faculty, say Gaurav Gupta. Once again, thankful to you, sir, for joining this section also. Reshma, what do you say? Hello? Yes, sir. Somebody was asked at this point of time question, Reshma. Reshma, you can send by mail actually. Yeah, tell me. Sir, exercise question number 5. Which chapter? Second chapter. Exercise E. Exercise? E. Yeah. Exercise E. Question number 5. So the question is, the wages of 8 men and 6 boys amount to rupees 33. Yeah. If 4 men earns rupees 4.50 more than the 5 boys, determine the wages of each man and boy. This is the question actually. Question number 5. Question number 5 from E exercise. Yeah, exercise E. All right. So again, this is again the condition based question. ऑप्शन से आप फटाफट कर सकते हो. Wages of 8 men and 6 boys is 33. तो ऑप्शन आप पुट कर दो, किससे आपका ऑप्शन 33 आ रहा है. जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपका 1.5 एंड देन 3 है, तो 8 into 1.5 and 6 into 3, 12 plus 18 gives 30. बट आपको चाहिए 33. ऑप्शन ए इज रॉन्ग, डज नॉट मैच. ऑप्शन बी ट्राई करके देखो. 8 into 3 and 6 into 1.5. This time 24 plus 9, 33. So option number B is a match. Thank you, sir. Thank you, students. Yeah. सर यही प्रॉब्लम एडिशनल में हो रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बन रहा है. कहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप बताइए. सर एडिशनल में सर. नहीं, इनकेस कोई नहीं बन रहा है तो मेरे को मेल करने के लिए बताया मैंने आपको. अच्छा सर. ठीक है. यस सर. Thank you so much. Thank you. Thank you, Gaurav, sir. Thank you sir. once again, students, all of you. Today we will wind up this section, and thank you so much.